वेलकम टू एसआर एकेडमी 2.0। आज के इस हाई एनर्जी मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हम सैटेलाइट ऑर्बिट्स के कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। सोचिए जरा, एक ऑब्जेक्ट जो 3074.6 मीटर्स पर सेकेंड की भयानक स्पीड से स्पेस में घूम रहा है, फिर भी अगर हम उसे अर्थ के इक्वेटर से देखें तो वो आसमान में बिल्कुल रुका हुआ यानी मोशनलेस लगता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पैराडॉक्स सुनने में जितना अजीब लगता है ना, इसके पीछे का साइंस उतना ही माइंड ब्लोइंग और एग्जाम्स के लिए क्रूशियल है। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स और फॉर्मूलाज को कवर करेंगे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के बीच का डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद लॉन्च जर्नी यानी जीटीओ, एचटीएस, इकोसिस्टम और लास्ट में एक क्विक रैपिड फायर रिविजन करेंगे। सेक्शन 1, द फिजिक्स एंड ऑर्बिटल फॉर्मूलाज। आइए देखते हैं कि इन मैसिव सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने वाली कोर फिजिक्स आखिर काम कैसे करती है। यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। सैटेलाइट को अपनी जगह बनाए रखने के लिए अंदर की तरफ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ परफेक्टली बैलेंस होना जरूरी है, एकदम परफेक्ट बैलेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को 3 प्रिसाइज स्टेप्स में याद रखना है। स्टेप 1, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना। स्टेप 2, 24 घंटे के ऑर्बिटल पीरियड के लिए वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना। और स्टेप 3, केपलर का थर्ड लॉ अप्लाई करके रेडियस की वैल्यू निकाल लेना। बस इतना ही करना है। अब जब हम रेडियस को आइसोलेट करते हैं तो अर्थ का मास और एक सिडेरियल डे जो एग्जैक्टली 86,164 सेकेंड्स का होता है, उसका यूज करके अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है। ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। इस टोटल डिस्टेंस में से जब अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस को माइनस किया जाता है, तब हमारे पास आता है एक मैजिक नंबर, एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर्स। ये एल्टीट्यूड एक स्टेशनरी ऑर्बिट अचीव करने के लिए नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसमें 1 किलोमीटर का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेक्शन 2, जियो-स्टेशनरी वर्सेस जियो-सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ये एग्जाम्स का एक क्लासिक ट्रैप है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है और मार्क्स कटते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कीजिए कि सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस होती हैं, लेकिन सारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी नहीं होती। एक ट्रू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए 0 डिग्री इंक्लिनेशन और एक परफेक्टली सर्कुलर पाथ होना मैंडेटरी है, जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स थोड़े इंक्लाइंड हो सकते हैं और आसमान में एक फिगर 8 पैटर्न बनाते हुए दिखाई देते हैं। ये डायरेक्टली प्रूव है कि क्यों ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स पोलर रीजन्स में अपनी सर्विस नहीं दे सकती। 0 डिग्री इंक्लिनेशन की वजह से इनकी एक स्ट्रिक्ट जियोमेट्रिक लिमिट होती है। अर्थ की कर्व की वजह से एक पॉइंट के बाद इनका सिग्नल पोल्स तक पहुंच ही नहीं पाता। सेक्शन 3, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स यानी जीटीओ। अब दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि हजारों किलो भारी इन मशीन्स को एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर ऊपर पहुंचाया कैसे जाता है? लॉन्च व्हीकल सीधा उस ऊंचाई तक एक बार में नहीं जाते। ये एक बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट शॉर्टकट लेते हैं जिसे जीटीओ कहा जाता है। सीक्वेंस समझिए, पहले लो अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में एंट्री, फिर पेरिजी पर इंजन फायर करके एक इलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट बनाना और फाइनली एपोजी पर पहुंचकर उसे 35,786 किलोमीटर पर सर्कुलराइज कर देना। ये मैकेनिज्म ब्रिलियंट है। सेक्शन 4, द रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम, एचटीएस एंड आईटीयू। अभी तक जो हार्डकोर फिजिक्स हमने पढ़ी ही ना, वही रियल वर्ल्ड में एक मैसिव ग्लोबल इकोनॉमी और स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉज को चला रही है। ये 6.6% का मैसिव कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखिए। ये हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स मार्केट की बूम को दिखाता है। ग्लोबल ब्रॉडबैंड की डिमांड इतनी ज्यादा है कि 2035 तक ये मार्केट $20 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। अब क्योंकि अर्थ के इक्वेटर के ठीक ऊपर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रिंग है, जगह लिमिटेड है, इसीलिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन ऑर्बिटल स्लॉट्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है। रूल सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ये रेडियो इंटरफेरेंस रोकने और डेवलपिंग नेशंस को भी इस लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स में हिस्सा देने के लिए बनाया गया है। सेक्शन 5, क्विक एग्जाम रिवीजन। अब अपना पूरा फोकस यहाँ लाइए, क्योंकि टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का, जिससे ये सारे फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए परमानेंटली याद हो जाएंगे। क्वेश्चन 1,
स्टार्टिंग में जो फिजिक्स डिस्कस की थी उसके बेसिस पर बताइए कि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए रिक्वायर्ड प्रिसाइज ऑर्बिटल स्पीड आखिर कितनी होती है। और इसका करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली 3744.6 मीटर्स पर सेकेंड या अप्रॉक्सीमेटली 3.07 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अर्थ की रोटेशनल स्पीड से परफेक्ट मैच करने के लिए इस स्पीड का होना जरूरी है। क्वेश्चन 2, वर्डिंग पर ठीक से ध्यान दीजिएगा। अर्थ के सेंटर से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का टोटल ऑर्बिटल रेडियस कितना होता है? ध्यान रखिए, सरफेस से नहीं पूछा गया है, सेंटर से पूछा गया है। आंसर है 42,164 किलोमीटर्स। इसमें 35,786 किलोमीटर्स का एल्टीट्यूड तो है ही और साथ ही अर्थ का अपना रेडियस भी ऐड किया गया है। एग्जाम में इस छोटी सी डिटेल पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन 3, किसी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को डायरेक्टली नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के ठीक ऊपर प्लेस क्यों नहीं किया जा सकता? अपने माइंड में उन बेसिक फोर्सेस और प्लेन्स को रिकॉल कीजिए जो हमने पहले पढ़े थे। इसका रीजन ये है कि ऑर्बिट का इंक्लिनेशन हर हाल में 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ अर्थ के इक्वेटर के ठीक ऊपर एक सिंगल रिंग में ही एग्जिस्ट कर सकता है ताकि सेंट्रोपेटल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्रॉपर्ली अलाइन हो सकें। आसमान में मौजूद ये लिमिटेड स्पेस रिसोर्स फ्यूचर में बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस खड़ी करने वाला है। जैसे जैसे स्पेस में भीड़ बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अर्थ के ऊपर इस जियोस्टेशनरी रिंग को असल में कौन ओन करता है? इस पर सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड। और अगर ये Look at the swarm of objects in low Earth orbit. It is a chaotic, densely packed volume of space. But as our view zooms out, we find a different environment altogether. A single, sparse, synchronized ring of satellites 35,000 kilometers away. Continuous global telecommunication and weather monitoring rely entirely on this specific mathematical boundary. It is a mathematically finite strip of real estate that requires intensive international management to prevent collisions and signal interference. The organization responsible for managing this global resource is the International Telecommunication Union, a specialized agency of the United Nations. Securing and operating a satellite in this exact ring is an intersecting challenge. It demands absolute compliance with Newtonian mechanics in the vacuum of space, alongside rigorous navigation of high-stakes international law on Earth. To understand how the geostationary orbit functions, we have to deconstruct the orbital mechanics that set its strict physical boundaries and the regulatory framework engineered to prevent its total collapse. Any stable orbit requires a precise equilibrium. The inward pull of Earth's gravity must be perfectly balanced by the outward centripetal force. This diagram illustrates the balance. The inward vector represents gravitational force, calculated using Newton's law. Opposing it is the centripetal force required for a circular path. By setting these forces equal, we isolate the specific relationship between a satellite's orbital radius and velocity. Velocity can be rewritten in terms of the orbital period. To match Earth's exact rotational period of 24 hours, or 86,400 seconds, we substitute that time value into our balanced equation. This data visualization charts the solution, yielding a required orbital radius of 42,164 kilometers from Earth's center. By subtracting Earth's radius, we arrive at the precise altitude for geostationary synchronization, 35,786 kilometers above the surface. Because this specific altitude is rigidly fixed by the laws of gravitation and the mass of our planet, geostationary space is not a three-dimensional volume. It is a single, one-dimensional line drawn directly over the equator. It is necessary to distinguish between geostationary and geosynchronous orbits. While all geostationary satellites are geosynchronous, not all geosynchronous satellites are geostationary. This 3D model shows a geosynchronous satellite with an inclined orbit. It completes one orbit every 24 hours, but from the ground it appears to drift north and south, tracing a figure 8 and a lemma pattern over a day. This side-by-side comparison demonstrates the difference. A strictly geostationary orbit requires zero inclination and a perfectly circular path. Only then does the satellite remain perfectly fixed over a single equatorial point. This fixed position provides uninterrupted communication and broadcasting for the hemisphere below it, but it carries a geometric limitation.
the satellite is physically incapable of servicing Earth's polar regions. Because uninterrupted coverage depends on remaining completely stationary relative to the ground, these specific equatorial slots have become the most contested real estate in space. To manage this congestion, the International Telecommunication Union established a legal framework. Article 44 of the ITU Constitution explicitly defines radio frequencies and associated orbits as limited natural resources that must be used rationally and economically. For spectrum management, the ITU divides the globe into 3 distinct regions. Each region operates under regulations designed to balance the demands of the countries within them. The core tension in this framework lies between 2 competing principles: efficient use, which protects actual current satellite operations, and equitable access, which reserves orbital slots and frequencies for future use by nations that lack current space capabilities. To guarantee equitable access, the ITU uses a priori planning procedures, detailed in Appendices 30, 30A, and 30B. These plans legally set aside specific orbital positions and spectrum volumes for developing countries, ensuring they are not permanently locked out of the geostationary ring. For non-planned bands, operators rely on coordination procedures. This is a first-come, first-served system, where established satellite operators claim slots and frequencies by negotiating directly with one another based on actual usage needs. This dual mechanism prevents an unregulated rush for prime orbital real estate, preserving access while allowing current technology to operate without signal interference. Legally occupying a non-planned geostationary slot requires navigating a strict multi-year administrative pipeline. The first step is the submission of Advanced Publication Information, or API. An administration must send a general description of the proposed network to the ITU between 2 and 7 years before the planned launch date. This data is then published in the International Frequency Information Circular. This serves as formal global notice of intent, allowing other nations to review the planned network and determine if it conflicts with their own systems. If conflicts are identified, the process moves to the coordination phase. Administrations negotiate to resolve interference risks using strict technical thresholds, such as power flux density limits, to mathematically determine whether 2 overlapping signals can coexist. Once a formal coordination request is published, affected administrations have a total period of 4 months to evaluate the data and either agree to the parameters or submit their technical objections. Upon successful coordination, the final step is notification. The frequency and exact orbital position are permanently recorded in the Master International Frequency Register. Completing this rigorous procedure grants the satellite international recognition, legally protecting its transmissions from harmful interference by any subsequent operations. An operational geostationary satellite is the final product of 2 entirely distinct engineering efforts: precision orbital mechanics and high-level international diplomacy. The physical bedrock is absolute. An altitude of 35,786 kilometers and a velocity of 3.07 kilometers per second are parameters that cannot be negotiated. This diagram outlines the dual-layered reality. On the physical side, gravity and momentum dictate the orbit. On the regulatory side, international recognition and interference-free operation are parameters granted exclusively by the ITU framework. Modern global service function only because they successfully navigate both layers simultaneously. The physics of the geostationary ring restrict our most critical space infrastructure to a single, finite line above the equator. Because this resource cannot expand, strict adherence to international regulatory law is a mandatory requirement for maintaining the global telecommunications grid.